ओके, ये लास्ट टॉपिक है आपका. With this topic we then finish our syllabus and subsequent weeks, मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त तक we'll just be doing a revision, assignments, some past papers and any of your doubts उनको देखेंगे. ठीक है, more time. I will just ask for one class a week and और किसी फैकल्टी को ज़्यादा क्लासेस चाहिए तो वहाँ जा सकती हैं. Okay, so enhanced survey program ESP code 2011 क्यों बना था ये? Main reason for that was bulk carrier losses. 2008 में 10 में which year was it? No, 1980s में, late 80s में. There were a lot of mid to late 80s. There were a lot of bulk carrier losses. Ships breaking down, क्रैक हो जा रहे हैं. सो बहुत हुए थे, तो तब जाकर के ये आपका कोड बना था. ना ESP फाइल होती है आपकी, एक जहाज में काफ़ी मोटी अच्छी फाइल होती है. उसमें हल रिलेटेड सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं सारे के सारे. कंडीशन इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स होती है, थिकनेस मेजरमेंट रिपोर्ट्स होती है. राइट, जो भी सर्वेज आप करते हो दे आर पार्ट ऑफ योर एनहांस सर्वे प्रोग्राम. It's a guideline for shipping companies and owners to prepare their ship for special surveys to maintain the safety of the ship while the ship is at sea or in port. So ये जो एनहांस सर्वे प्रोग्राम होता है, इसके लिए एक शेड्यूल बनता है, ओनर को भेजा जाता है, डिस्कस किए जाते हैं बिटवीन द ओनर एंड द क्लासरूम सोसाइटी. एंड नॉर्मली इट इज डन विथ योर एनुअल सर्वेज जो हमने HSSC में देखा था, उन्हीं के साथ इनको कपल कर दिया जाता है. The rules and regulations for the classroom society of ships require a survey planning questionnaire and a survey program to be prepared by the owner at least 6 months in advance of the intermediate or special survey and submitted for agreement. So आपके जो normal surveys चलते हैं, annual, periodical, intermediate. So what is done is that is for ships which are older, तो सर्वे प्लानिंग क्वेश्चनर होता है, राइट. प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाता है बाय द ओनर 6 months इन एडवांस एंड सेंड इट टू द क्लासरूम सोसाइटी एंड अ डेट इज अग्रीड कि कब ये सर्वे होगा. The program is to include proposals for the special survey, including the means for providing access for close-up survey and thickness measurement. Obviously, thickness measurement कब होती है? As and when the ship gets old, 10 साल 15 साल होने लगता है, तो there is loss of material. प्लेट्स की थिकनेस करोशन की वजह से, सो वो थिकनेस मेजरमेंट भी किया जाता है. एंड द सर्वे विल कमेंस ओनली आफ्टर द सर्वे प्रोग्राम हैज बीन अग्रीड बिटवीन द ओनर्स एंड द क्लासरूम सोसाइटी. Owners are advised that they may submit a survey program for intermediate survey, subject to the survey and dry docking planning, and that is for approval के लिए आपने उसको भेज दिया. Now, chapter 11. Initially, the time when I joined shipping, उस टाइम में सिर्फ 8 चैप्टर हुआ करते. हाँ, 16. Oh shit. एक मिनट, हाँ वापस आ गया जी यार. I really do not understand क्या वजह है. Okay guys, just 1 minute, मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा. I think गर्म हो गया है या something. Yeah. So I'll just restart my system. Be back in 2-3 minutes.
Screen visible, sir, everyone? Yes, sir. Okay, so saying that during our time there were SOLAS में खाली 8 chapter हुआ करते थे, बाद में chapters add होते रहे, and this chapter 11 was added as maritime safety, right? And this chapter 11 was later on subdivided into two groups, part 1, part 2, and part 1 was maritime safety, and part 2 was what do you call maritime security, SPS code. खैर anyway, according to the guidelines, it has two annexes. दोनों annexes similar है. Annex A, Annex B. Annex A bulkers के लिए है. Annex B is for the tankers. दोनों में same है, same number of chapters, everything same. जो difference है, it is the construction requirements for both the vessels, both type of vessels rather. So guidelines for enhanced survey program for inspection during survey of bulk carrier, and guidelines for enhanced survey program of inspection during survey of oil tankers. सब में नौ chapters हैं A और B में, which are almost similar. Only dissimilarity अगर कोई है तो being the operational and construction requirements जो अलग-अलग टाइप के vessels के लिए, tankers and bulk carriers के. Otherwise it's identical. Now वो chapters हैं, जो 9 chapters हैं, briefly यहाँ पे discuss कर रखा है. ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स में, but let's go through this. General application documentation on board to be completed prior to the inspection, which is to be served as basis for the surveys. Right. Chapter 2 describes how ESP will be carried out during the periodical surveys, along with the timings and conduct of the enhanced surveys and requirements of the dry docking. Chapter 3 describes enhanced survey inspection carried out during annual survey, right, which includes cargo holds, tank pressure system testing, pressure testing. Chapter 4 deals with intermediate surveys in addition to the annual survey requirement. So stages में किया जाता है, but it has to be agreed. Discusses the needed preparation for surveys, condition and equipment for surveys, access to the surveyor structure, and conduct of survey at sea or a tanker. Chapter 6 deals with intermediate and thorough repairs for damages and wastages. 7 discusses the requirement of onboard documentation supplied and maintained. क्या-क्या documentation? ये एक question आता है आपका. Document on board. वो करेंगे अभी. By the owner that must be available to the surveyor, and requirements for the survey report. उसकी एक report file जो आपने शुरू में देखी थी, survey file होती है. Supporting documents, review of document by surveyor. Chapter 8 discusses the process of reporting and evaluation of the survey, acceptability by the class, and continued structural integrity. A condition, evaluation report of the survey and results to be issued to the owner eventually, finally. Reporting and evaluation of surveys, acceptable and continued structural condition evaluation to be given to the chapter 8 और 9 दोनों सेम ही दिख रहा है. Okay. Now ये कुछ definitions आपकी आ जाती है कि what is suspect areas, critical areas, pain condition या coating condition कैसी है, fair, poor, इस टाइप से. Then so ये आपका है suspect areas. Now suspect areas are locations showing substantial corrosion and or are considered by the surveyor to be prone to rapid wastage. Now these surveyors are very experienced people. बहुत surveys कर चुके हैं ये लोग. So they have an idea which part of a vessel is prone to more corrosion या rapid wastage. So उस एरिया को ये लोग जाके देखते हैं, suspect areas. So these are locations showing substantial corrosion or considered by the surveyor to be prone to rapid wastage. So for example, जो ballast water tank है, fuel oil tank है. So double bottom tank है, वहाँ fuel भी ले जा रहे हैं और उसके बगल में आप ballast भी ले जा रहे हैं. So उन दोनों के बीच का जो bulkhead होता है, दोनों के बीच का जो bulkhead होता है, वहाँ पे आपका थोड़ा सा corrosion ज़्यादा होता है.
राइट, क्योंकि आप अपने फ्यूल ऑयल टैंक को हीट भी करते हैं, सो वहाँ पे जनरली इट हैज़ बीन सीन कि उस एरिया में करोशन ज़्यादा हो जाता है, सो वो सस्पेक्ट एरिया में आ जाता है. सब्सटैंशियल करोशन is the extent of corrosion such that assessment of corrosion pattern indicates wastage in excess of 75% of the allowable margin, but within acceptable limits. Right? It is in excess of 75%. जो भी आपका allowable margin है, let's say your plate is 10 mm and 25% is allowable. That means 2.5 mm. वो तो आपका allowable है. अब उसका 2.5 का 75%, but within acceptable limits, that is considered as substantial corrosion. Coating condition defined good, fair, poor. ये भी definition में आता है आपका. Coating condition quite common है. Condition only where minor spot rusting होती है. Then fair condition जहाँ breakdown of coating at edges of stiffeners, belt connection, light rusting, over 20% or more of the area under consideration. जिस एरिया को आप देख रहे हो वहां पे जो रस्टिंग है, राइट, over 20% or more of the areas under consideration, but less than that defined for poor condition. So that is called your fair. Poor, where the general breakdown of coating over 20% or more of the areas or hard scale has formed at 10% or more of the area under consideration. जिस एरिया को आप देख रहे हो वहां पर 20% से ज्यादा वो है और हार्ड स्केल फॉर्म हो गया है, 10% or more of the area under consideration. That is called your poor condition. So coating condition is defined as good, fair and poor. Close-up survey means जहां पे उसका हाथ पहुंच जाए सर्वेयर का. Areas is the survey where the detailed of structural components, जिस एरिया को वो इंस्पेक्ट कर रहा है, are within close visual examination range of the surveyor. जहाँ पे वो अच्छी तरह से क्लोजली देख सकता है. जनरली वी से within the surveyor's reach, मतलब उसका जो हाथ है वहां तक उसका हाथ पहुंच सकता है. Structural areas, राइट, ये वो एरियाज है जहाँ पे फ्रॉम कैलकुलेशन दे रिक्वायर मॉनिटरिंग, या आपका जहाज की हिस्ट्री ऐसी है, या आपके सिस्टरशिप में सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल एरिया में कोई क्रिटिकल क्रैक्स वैक्स आए हैं, उन एरियाज को कहते हैं. आर लोकेशंस which have been identified from calculations to require monitoring, or from the service history of the ship, or from similar or sister ships, to be sensitive to cracking, buckling, corrosion, which would impair the structural integrity of the ship. They are defined as critical structural areas. जहाज की हिस्ट्री ऐसी है, उसी एरिया में ज़्यादा हो रहा है, या उसकी सिस्टर शिप है वहाँ ज़्यादा हो रहा था, उसकी सिस्टर शिप में देखा गया है तो यहाँ भी हो सकता है. And which are likely sensitive to cracking, buckling or corrosion. जो watertight integrity या structural integrity of the ship will be impaired. So those are critical structural areas. So ये थी आपकी definitions. Now एक होता है, एक क्वेश्चन ये है आपका development of survey program, और एक आता है procedure for survey, and तीसरा documentation on board. So survey program जब develop होता है, the following documentation is to be collected and consulted with a view to selecting tank areas, structural elements to be examined. So अभी आपने हमने ऊपर कहीं पे देखा था one of the requirements, सबसे पहले हमने क्या देखी थी, चैप्टर 2 में था शायद, हाँ चैप्टर 1 में, जनरल एप्लीकेशन documentation on board to be completed prior to the inspection.
सो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है वो इसमें डिस्कस किया गया है. डेवलपमेंट ऑफ सर्वे प्रोग्राम. द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड एंड कंसल्टेड. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज डेवलपमेंट ऑफ द सर्वे प्रोग्राम. अभी हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉर सर्वे में आएगा. सो दिस इज द डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड. सर्वे स्टेटस, बेसिक शिप इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑन बोर्ड, वो सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन. मेन स्ट्रक्चरल प्लान्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ हाइट टेंसाइल स्टील्स. तो शेल एक्सपेंशन प्लान जितने भी हैं, टैंक केस, थिकनेस मेजरमेंट, वो सब. रेलेवेंट प्रीवियस सर्वे and inspection reports from both Classroom Society and the owner. Information regarding the use of ships, tanks, typical cargoes, and other relevant data. Information regarding corrosion prevention level on the new building. Information regarding the relevant maintenance level during operation. So that is the development of the survey program. Now, what all document is to be kept on board or kept ready by the ship owner on board and maintained? वो एक क्वेश्चन आता है आपका. So following documentation is to be placed on board and maintained and updated by the owner for the life of the ship in order to be readily available for the survey party. Survey report file. Reports of structural survey. Executive hull summary. Thickness measurement report. Then documents. Additionally, जो चाहिए आपको. The following documents is to be placed on board, including any other information that will assist in identifying suspect areas requiring examination. So ये documentation आपको तैयार रखना है. Structural plans, cargo, ballast tanks, previous repair history, cargo ballast tank history, extent of use of inert gas plant and tank cleaning procedures, surveys by ships personnel, जो हम लोग सर्वे करते हैं भेजते हैं अपनी कंपनी को. Structural deterioration in general, leakage, bulkheads, piping. Then condition of coating condition कैसी है, ballast tanks की, holes की, etc. Any other information that will identify suspect areas requiring survey. So, ये सब आपको try करना है. Prior to the survey, the completeness of the documentation on board and its consent is the basis for the survey. तो ये आपको documentation तैयार करना है prior to the survey. अब ये equipment of survey इस पर कुछ नहीं आता है, but I've just entered here just for you कि क्या क्या चाहिए. टॉर्चेस चाहिए, हेलमेट चाहिए, डॉग लेग जो मिरर्स होते हैं वो चाहिए, लाइफ लाइन चाहिए, सेफ्टी हेलमेट्स, हैमर. अब ये सर्वेयर का हैमर थोड़ा अलग होता है. ये जो हैमर जिसकी हम बात कर रहे हैं, okay, so let's go through this. Torches, which is flashlight approved by the competent authority, that is these are explosive proof torches. SOLAS की होती है and explosive proof होती है. High density beam recommended for tank survey. Then torches to be fitted with straps so that the hand can be free. Hammer, एक स्पेशल हैमर होता है, उसको सर्वेयर्स हैमर कहते हैं. एक साइड से ये पॉइंटेड होता है और एक साइड से ये मतलब लिटरली पॉइंटेड, और एक साइड से आपका फ्लैट होगा. सो लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ दिस फॉर यू. सो एक साइड से ऐसा फ्लैट टाइप का रहता है, फिर बीच में आपका हैमर आ जाएगा और एक साइड से आपका ऐसा पॉइंटेड रहेगा. यहाँ पर आप शिट यार, सॉरी गाइस, मेरे ख्याल से मेरा टच स्क्रीन में गड़बड़ है. ओके, जस्ट 1 minute sir, I'll have to restart again.
हैमर की मैं बात कर रहा था. So hammer, special hammer होता है, flat on one side, pointed on the other side, and that is what the surveyor uses. And this hammer can also be used in case anything emergency है, may be useful in case of emergency, SOS signal transmit करने के लिए. Oxygen analyzer, multi-gas detector. Of course, it's a personal one also that you carry with you. Safety belts, safety lines. So wherever the survey is going, उसके साथ एक लाइन चली जाती है, safety line. And of course, safety belts. अगर height आपकी 3 से ज़्यादा है तो harness he has to wear. So these are the equipments that shoes are all safety shoes, which जिसमें जो अगर nails use की गई हैं, then that nails have to be spark proof. That is copper की nails लगाते हैं उसमें shoes में अगर पहन रखा nails वाले shoes है तो. Procedure for the survey, ये एक आपका next question आता है इसमें. Procedure for the survey. उससे पहले हमने क्या किया था? Development of survey program. Now, ship owner will notify the flag state and the recognized organization, that is your classified society, of its intention to proceed for the enhanced survey program. RO, that is your classified society, will issue a survey planning questionnaire to the owner. एक prescribed format होता है, which is used by the classified society. The owner shall complete the questionnaire and send it to the flag state and also to the class. Owner will then prepare a survey plan for the ESP together with the RO and the flag state and submit it. दोनों को submit कर दिया जाता है फिर. The plan shall be developed using the model survey plan set out in the appendix of the scheme, जो भी आपका questionnaire है उसके appendix में. After taking into account the overall status of the tanker and various survey documents. Extent of the survey shall be in accordance with the scheme and the ESP of inspections, including close-up surveys and thickness measurements. कम से कम 2 qualified surveyors from the classified society will be coming, who have been trained and are experienced in carrying out the intermediate or renewal surveys, and they will carry out the survey and also supervise the taking of thickness measurement. So कम से कम 2 surveys आपके आएंगे for your ESP. To ensure efficient execution of the survey, अब first meeting की जाती है between the surveyors, owners, representative, thickness measurement, master, operator, आपका जो superintendent है वो सब आकर के एक meeting की जाएगी before the start, and all recommendation and conditions of the class shall be rectified to the satisfaction of the classified society surveyor. Surveyors will then prepare a report, forwarded to the classified society headquarters for review, along with whatever photographs, sketches, scantlings, diagrams, what's up. After review, the RO will prepare the ESP final report and submit it to the flag state. Now, ये जिसके हम classified society की बात कर रहे हैं सर, let's say you are with GL या DNV या किसी के साथ भी आप हैं. So there are surveyors to the classified society throughout the world. आप कहीं भी सर्वे करा सकते. Let's say GL का हेडक्वार्टर्स हैम्बर्ग, तो आपने सिंगापुर, हांगकांग कहीं भी सर्वे कराया, वहाँ जो सर्वेयर आएगा GL का, he is authorized by the headquarters. He has been given a number, और जो फॉर्मेट वो यूज करेगा सर्वे के लिए will be the same format which is used throughout the world by GL. ऐसा नहीं है कि हांगकांग के लिए अलग फॉर्मेट होगा, इंडिया के लिए अलग होगा. तो GL का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, it will be used for all the surveys. Now the surveyor in Singapore, Hong Kong, वो आता है, सर्वे करता है, रिपोर्ट बनाता है, and he will send it to the headquarters. जो गाइडलाइंस है हेडक्वार्टर्स को, एंड हेडक्वार्टर्स से फिर आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है. इवन जो HSSC की हम बात कर रहे थे, जो भी सर्वेस आपके हैं, क्लासिफिकेशन सोसाइटी इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द फ्लैग स्टेट. So all the certificates are issued
बाय द फ्लैग स्टेट, आई वुड से कुछ फ्लैग स्टेट खुद देता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल योर सेफ मैनेज सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है वो देता है, CSR का कंटिन्यूस सिनॉप्सिस रिकॉर्ड ये आपको फ्लैग स्टेट देता है। बाकी के जो फ्लैग जो सर्टिफिकेट्स है, लोड लाइन, सेफ्टी कल्चर, सेफ्टी इक्विपमेंट, ये सब आपको क्लासिफिकेशन सोसाइटी देती है ऑन बिहाफ ऑफ द फ्लैग स्टेट, तभी हम RO बोलते हैं उसको, recognized organization. That means classification society has been recognized by your flag state. So वो flag state के behalf में classification society आपको देती है. Okay, coming back, RO shall issue an interim certificate of compliance to the tanker. उसकी validity 5 महीने की होती है, and फिर आपको original जो है आपका वहाँ से मिल जाएगा. The flag state shall review the final report and prepare a review record. So this is your procedure for the survey. Each of the above actions shall be completed within the prescribed time frame prior to the anniversary date of the delivery of the tanker, and जो भी आपकी delivery anniversary date है. On satisfactory completion, the flag state shall issue a statement of compliance to the tanker or to the bulk carrier. Validity 5.5 years की होती है उसकी. So this is your preparation for the survey. So now here are the questions which are generally there in your papers. What is an enhanced survey program? Yeah, write short notes on the enhanced survey program. Briefly discuss the chapters. But ये question आया नहीं, ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है. But question ये वाला आया नहीं है. What is enhanced survey program? Yeah, write short notes. Yeah, briefly discuss the enhanced survey program. ये है आपका. Then what documents are to be maintained on board and placed before the survey party? That is documents on board, your documentation on board. Then describe how you will prepare your vessel for an ESP survey, that is development of the survey program. And write short notes on coating conditions, suspect areas, close-up areas. These are the common questions. Except question number 2 को छोड़ करके chapters मैंने नहीं देखे. Other questions जो chapters है वो usually आते हैं आपके एग्जाम्स में. हाँ जी सर, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस नाउ? सर आपने ये नोट्स ये वाले भेजे हैं, आपने ये वाले ESP के? एक मिनट अभी देख लेते हैं. जस्ट 1 मिनट. क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भेजे? ये नोट्स फेज 1. हाँ, ESP कोड है इसमें. आइटम नंबर 7. ये मैं सर किसी मेल आईडी से आए थे सर, एक बार बताना आप ये किससे भेजते हो? ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है? जी सर. ये कोड 2011 ये भेजे आपको, ये मई 2021 में अपडेट किए हैं. और सर ये ईमेल आईडी बताना एक बार आपकी. nctiwari@ariworld.com. NCTEW है, हाँ, TI नहीं है, TEWARI. TI मत कीजिएगा. डेवलपमेंट ऑफ सर्वे प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन ऑन बोर्ड, ये जो आपको दिख रहा है इक्विपमेंट फॉर द सर्वे, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन, बट फिर भी इक्विपमेंट ऑफ द सर्वे. देन प्रोसीजर फॉर द सर्वे.
ओके सर, है सर 7 नोट्स। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन अभी? हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें करोशन, वेल्डिंग, बल्कहेज, फोरएंड, वाटर टाइट डोर, HSSC, सर्वेज, ESP कोड, ये सब के सब मंथ ऑफ मई में अपडेट करके भेजे थे। जैसे मैंने कहा ना, मेरे पुराने वाले नोट्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, तो ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। सो ये सब फिर वापस अपडेट किया। तो सब है ना आपके पास?